मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है तेजस 2.0। तो अभी आपको पता है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये ऑफ कोर्स आपके लिए टॉप सिक्योरिटी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम सेकेंड वर्जन जो है तेजस मार्क 2 उसको जो है बनाएंगे। उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है, फ्लाइट टेस्टिंग भी हो रही है, सर्टिफिकेशन भी किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहले 2500 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन कर चुकी थी तेजस मार्क 2 के लिए, और अब 6500 करोड़ रुपए और सैंक्शन कर दिए हैं। तो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इसमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे। स्टेल्थ मतलब हिडन, छुपाने के इसको फीचर्स होंगे कि कैसे इसको छुपाया जा सकता है। अब ये हमारे मिराज 2000, जैगवार और मिग 29 जो हमारे पुराने हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनको रिप्लेस करने के लिए तेजस 2.0 आने वाला है। अब आपको पता है तेजस जो है, जो तेजस फर्स्ट था, जो तेजस फर्स्ट है, जो तेजस मार्क 1, वो हमारे डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस के लिए। लेकिन जो तेजस मार्क 2 है उसमें ऐसे फीचर्स डाले जाएंगे, हैवी स्टैंड ऑफ वेपन्स डाले जाएंगे कि वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी कर पाएगा एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस के। ठीक है, तो हम देखते हैं तेजस के बारे में थोड़ा सा। तो सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए इसको बनाया गया है। 2003 में इसका नाम दिया गया था ऑफिशियली तेजस। पहला सेल्फ मेड फाइटर जेट है, फुली वेपनाइज्ड फाइटर जेट। 2019 में हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है। सेकंड क्यों है? क्योंकि पहला जो था वो आपका HAL का HF-24 मारुत था। ठीक है, अब इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। 4000 किलो तक का जो है ये पेलोड लेके जा सकता है। सिंगल पायलट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। ऑफ कोर्स ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये आपके तेजस मार्क 1 की हैं। जो तेजस मार्क 2 है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा, वो बहुत ही ऑफेंसिव होगा। ठीक है, तो ये आपका जो तेजस मार्क 1 है वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। मैक्सिमम स्पीड उसकी मैक 1.8 है। मैक स्पीड क्या होती है? मैक 1 मतलब जितनी साउंड की स्पीड होती है, तो अगर 1.8 है तो मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जनरली इसकी रेंज 850 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये अप्रूवल दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो अब जो है ये सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट जो होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या कोई और सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब भी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अपॉइंट करती है। कोई भी इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो सब जो है फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। अब इसके अंदर और कौन से कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर, ये चारों भी इसका पार्ट होते हैं। तो कोई भी डिफेंस रिलेटेड इशू है अगर उससे डील करना, लॉ एंड ऑर्डर या इंटरनल सिक्योरिटी है उससे डील करना, ये सब काम जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का होता है। अब कोई भी अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़ से ऊपर का, तो उस जो कि DRDO या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, डिफेंस प्रोडक्शन को जो है वो अगर चाहिए 1000 करोड़ से ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर करना है उन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी अप्रूवल चाहिए होता है। अब सारे मैटर्स जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है उसके लिए भी अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का चाहिए होता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वेवैक। सर्वेवैक आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन सर्वेवैक जो है आपके सर्विकल कैंसर को जो है प्रिवेंट करने के लिए ये बना दी गई है, ये लॉन्च की जा रही है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम अगले 1 साल के अंदर 200 मिलियन जो है ये सर्वेवैक वैक्सीन डोजेस हम बनाने की कोशिश करेंगे, और लगभग 400 के रुपए के आसपास ये जो है ये वैक्सीन का रेट होगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऐसे ही। तो अब जो है सर्वेवैक कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन को इससे वैक्सीनेट किया जाए, फिर उसके बाद ही हम इसका एक्सपोर्ट शुरू करेंगे। अब इंडिया की ये पहली फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिला वायरस वैक्सीन है। क्वाड्रीवेलेंट मतलब कि 4 जो डिफरेंट एंटीजेंस होंगे जो HPV के, उनको टारगेट करती है ये। और सर्विकल कैंसर होता क्या है, क्यों इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है? क्योंकि ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन है, HPV से होती है ये। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है विमेन में, और सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन विमेन है। ठीक है, और इंडिया में लगभग 1/5 ऑफ ग्लोबल केसेज आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि
हमारे इंडिया में लिटल अवेयरनेस है अबाउट दिस कैंसर अमंग वीमेन, और लेस देन 10% ऑफ वीमेन ही जो है वो स्क्रीन करवा पाती हैं अपने आप को और उनको पता लग पाता कि उन्हें सर्विकल कैंसर था। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, ऑफकोर्स क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन एक और भी एग्जिस्ट करती है, गार्डेसिल, जो कि मर्क ने बनाई है, और एक बाइवेलेंट वैक्सीन भी है जो कि मतलब 2 एंटीजेंस को टारगेट करती है, वो है सर्वेरिक्स। अब लेकिन ये क्या है कि ये इंपोर्टेड वैक्सीन हैं, बाहर की कंट्री में बनाई गई हैं, तो हमको महंगी पड़ती हैं। लगभग देखो 2800 रुपये पर डोज जो है ये इसका कॉस्ट पड़ती है, और अगर हम सर्वेरिक्स को देखें तो उसकी कॉस्ट लगभग 3300 रुपये पड़ती है। तो अब उसके कंपैरिजन में हमारी जो ये सर्वेवैक है, ये तो उसकी मतलब 1/7 या 1/8 कॉस्ट पे हुई है ना। तो इसके लिए क्या है कि HP वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको अभी तक हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास अपनी कोई इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन नहीं थी, और जो ये वैक्सीन हैं ये बहुत ही महंगी हैं। अब जो है सर्वेवैक के बाद ऑफ कोर्स इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, और ICMR ने कहा है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन अगर हम दे दें तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। अब सर्वेवैक के बारे में देखते हैं। ये वायरस लाइक पार्टिकल से बनाई गई है, जैसे आपके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनती है, और ये बहुत अच्छी एंटीबॉडीज जनरेट करी है इसने HPV प्रोटीन के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसका रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स लगभग 100% ऑफ वैक्सीन रेसिपिएंट्स में देखने को मिला, और इसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स भी एक्सीलेंट हैं। अब 9 साल की उम्र से जो है विमेन में ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, और ये जो है वैक्सीनेशन जो है ऑफ कोर्स लॉन्च तो कर दी है, बट मार्केट में आने में भी हो सकता है कि इस एंड ऑफ द ईयर ये मार्केट में भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक स्पेशल प्राइस पर लगभग 200 से 400 के बीच में इसका प्राइस होगा, और कम से कम 50 मिलियन गर्ल्स जो है 9 से 14 ईयर्स ऑफ एज को उनको वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम कर रही है गवर्नमेंट। और सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन इंडिया में और ग्लोबली एलिमिनेट करने के लिए एक लो कॉस्ट बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन जो है सर्विवैक साबित होने वाली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्फेटामाइन। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर फॉर साइंस एंड टेक टॉपिक। ठीक है, तो गोवा पुलिस ने बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट के केस में देखा है कि उनको जो है मेथएम्फेटामाइन जो है उसकी ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब एम्फेटामाइन क्या है? ये इसको मैथ कहते हैं शॉर्ट में। एक पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है। आपको पता होगा ना, एम्फेटामाइन बहुत ही फेमस है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, और खासकर जिनमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं उनको एम्फेटामाइन दिया जाता है। तो मैथएम्फेटामाइन जो है वो उसका भी एक एडवांस्ड वर्जन है। तो ये ऑफकोर्स इसको लोग जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब एज अ ड्रग भी यूज़ करते हैं, जो कि स्मोक करके, स्वेलो करके, या फिर स्नॉट क्या होता है, आप नाक से इसको खींचते हो। ठीक है, तो या फिर इंजेक्शन के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। कई बार लोग जो है इसको वाटर में, अल्कोहल में मिक्स करके भी इसको जो है वो पाउडर इसका लोगों को ड्रग्स के लिए दे देते हैं। अब इससे होता क्या कि अगर की ओवरडोज हो जाए तो इससे हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता है, और बॉडी में ये डोपामिन को बहुत तेज़ी से रिलीज करता है। डोपामिन क्या है? फील गुड हार्मोन। ठीक है, आपको कुछ भी जब आपको बहुत अच्छा फील होता है किसी भी चीज़ से, जब समझ लो आप म्यूजिक सुनते हो या आप कुछ भी ऐसा करते हो, आपको अगर अच्छा फील होता है तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन्कोलिटिक वायरसेस। तो ये आपके ऑफकोर्स साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक कैंसर सेल नामक जर्नल में ये देखा गया है कि ऑन्कोलिटिक वायरसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून कैपेसिटी को अगेंस्ट वायरस जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑन्कोलिटिक वायरसेस क्या होते हैं? ये सिलेक्टिवली सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करते हैं और उनको मारते हैं, बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इन वायरसेस का हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं ना, कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता लगेगा कि कौन से कैंसर सेल्स हैं, उनको कैसे टर्मिनेट करना है रिकॉग्नाइज करके। तो ये वायरसेस का यूज़ करते हुए, जैसे एक वायरस इसमें देखा गया है माइक्सोमा नाम का, ये जो आपके टी सेल्स जो कि माइक्सोमा वायरस से जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करके उनको है जो है किल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा यूज़ ऑफ वायरस हमको देखने को मिला है सम ऑन्कोलिटिक वायरसेस का। नॉट सारे वायरसेस तो नहीं होते ऐसे, बट कुछ वायरसेस जो हैं ऐसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भांग आपके सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स का इशू है ये। ठीक है, तो अब जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक पर्सन को बेल दे दी है फॉर पोजेसिंग 29 kg ऑफ भांग एंड 400 ग्राम ऑफ गांजा, क्योंकि जो है
हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कहीं पे भी एनडीपीएस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि भांग जो है वो कोई प्रोहिबिटेड ड्रिंक या प्रोहिबिटेड ड्रग है, ठीक है। तो जो सिंगल बेंच की जजमेंट है उसमें कहा गया है कि जो मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जो जजमेंट थी 2002 और 2004 की, उसमें कोर्ट्स ने बोला था कि भांग जो है वो गांजा नहीं है, वो एनडीपीएस एक्ट में इसलिए कवर नहीं होता है। भांग एक्चुअली में क्या है, एक एडिबल प्रिपरेशन है जो आपके कैनबिस प्लांट से बनाई जाती है, आपके ठंडाई या लस्सी में इसका यूज़ किया जाता है, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सालों से, सेंचुरीज से इसको कंज्यूम किया जा रहा है, खासकर होली और महाशिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स पर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नुआखाई जुहार। सो पीएम मोदी जो है ये ऑफकोर्स आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने नुआखाई जुहार पे लोगों को ग्रीट किया है। ये एक वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये जो आपके सिमदेगा जो है आपका एरिया झारखंड में, वहाँ पर भी मनाया जाता है। एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जब लोग जो है वो न्यू राइस ऑफ द सीजन को जो है वो वेलकम करते हैं। तो नुआ मीन्स न्यू, खाई मीन्स फूड, ठीक है। तो ये 5th डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट को पड़ता है, भद्रपद मंथ में, ठीक है। अब न्यू खाई जो है उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 कलर्स, तो 9 सेट ऑफ रिचुअल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं, और आफ्टर जो है न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप जो है जिसको नाभाना कहते हैं, वो अपने प्रेजाइडिंग डेटीज को देते हैं लोग, और उसके बाद जो है अलग अलग तरह की डेलिकेसीज को वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Tejas 2.0. So this topic is important for your security section. So you know that we have successfully incorporated Tejas Mark 1, that is the Tejas LCH, and building upon the success of that Tejas, the government of India, rather the Cabinet Committee on Security, is planning to develop the Tejas Mark 2 with prototypes, flight testing and certification. For that 2,500 crore rupees were already sanctioned for this project, and now the Cabinet Committee on Security has further sanctioned 6,500 crore rupees for this project. So it will be a 5th generation advanced medium combat aircraft. It will also be having stealth features, and it will be developed in the next few months. Okay, so it will succeed fighters like Mirage 2000, Jaguars and MiG-29s, which are getting old in the Indian Air Force combat fleet. So of course the lightweight Tejas Mark 1 was actually meant for air defense only, so it was only meant for defensive operations, but this Tejas Mark 2 will have heavy standoff weapons, and it will be meant for offensive operations into enemy territory. So it will be a major upgrade over Tejas 1. So what is Tejas? The Tejas Mark 1 is a single engine delta wing light multi-role fighter aircraft designed and developed by the Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force and Indian Navy. So it was named as Tejas in the year 2003, and it is India's first self-made fighter jet. It is a fully weaponized fighter jet, which was incorporated into the Indian Air Force in February 2019. So it is the second supersonic fighter jet. Why? Because HAL had already developed HAL HF-24 Marut before it. So what are the specifications of the Tejas? So Tejas has a maximum payload capacity of about 4,000 kgs. It is a single pilot, single engine aircraft, and its maximum takeoff weight is 13,300 kgs. So it is a 4th generation fighter aircraft, and it has the capability of air-to-air refueling also. It can attain the maximum speed of Mach 1.8, which means 1.8 the speed of sound. And it has a general range of about 850 kilometers, but it can also have a combat range of 500 kilometers. So because the Cabinet Committee on Security has approved this Tejas Mark 2.0 project, so let us see about Cabinet Committee on Security also. So any major decision with respect to significant appointments like your even NSA or major appointments, Chief of Defense Staff, all such appointments which are related to security of the country are made by Cabinet Committee on Security. And issues of national security, any defense expenditure of India, all these decisions are taken by the Cabinet Committee on Security. So Prime Minister chairs this committee, of course, and it comprises of Minister of External Affairs, Minister of Home Affairs, Minister of Finance, and even the Defense Minister. So what are the functions of this committee? Of course, it deals with all defense related issues. It also deals with the law and order and internal security related issues. It also involves any capital expenditure which is more than
1,000 crore in respect of Department of Defense production and Department of Defense research and development. All these are taken by only Cabinet Committee on Security. Even all the matters related to the atomic energy are all the decisions with respect to atomic energy are taken by Cabinet Committee on Security only. So the next topic is SurveyVac. So SurveyVac is a topic for your social issues. So Union Minister for Science and Technology has recently announced the launch of India's first indigenously developed vaccine, SurveyVac, for the prevention of cervical cancer. So it's a vaccine which has been developed by the Serum Institute of India. And the Serum Institute of India has said that they are planning to launch about 200 million doses in the next 1 year. And they are going to prioritize the vaccination of Indian women first, and only after that the export would start. So it is the first quadrivalent human papilloma virus vaccine, which means that it can stimulate an immune response against 4 different antigens. A bivalent vaccine would mean it can generate an immune response against 2 different antigens. So what is cervical cancer? So it is the most common sexually transmitted long-lasting disease, and it is caused by human papillomavirus, and it is the main cause of cervical cancer in women. So it is the second most common cancer type in women, and it is the second leading cause of cancer death in women. India accounts for almost 1/5 of the global burden of this cancer, and because there is little awareness among women in India about this cancer, there is less than 10% of screening among Indian women regarding this cervical cancer. So we already have certain vaccines like the quadrivalent vaccine called Gardasil, which has been developed by Merck, and a bivalent vaccine called Cervarix, developed by the GlaxoSmithKline. But of course, these two vaccines, because they are imported, they are very expensive, about 2,800 rupees per dose for Gardasil and 3,300 rupees per dose for Cervarix. Of course, that's why we launched this HPV vaccination program in 2008, but it has not yet been included in the national immunization program because of the costs. So now, after this SurveyVac, probably we will have this SurveyVac in the national immunization program also. In 2016, ICMR said that adolescent girls can be vaccinated with 2 doses of HPV vaccines for the appropriate protection. So what is SurveyVac? So SurveyVac is based upon virus-like particle vaccines, and this will be similar to hepatitis B vaccine, and it will provide protection against protection by generating antibodies against the HPV protein. During the phase 3 trials, it had shown a robust immune response in almost 100% of the vaccine recipients with excellent safety records. So that's why the government is planning to start this vaccination with a relatively young age of 9, and the women, the girls between the age of 9 to 14 years in India will be targeted, with almost 50 million girls being planned to be targeted in the next 1 year. So this SurveyVac, because it is a low-cost vaccine, it will be a huge step to accelerate cervical cancer elimination in India and the world. So the next topic is methamphetamine. So Goa police, so this topic is important for your science and tech section. So Goa police has said that BJP leader Sonali Phogat was given the recreational drug called methamphetamine on the eve of her death. So methamphetamine is known as meth for short. It's a powerful, highly addictive stimulant, and it is generally used to treat attention deficit hyperactivity disorder. Generally, the people who need any particular kind of focus in their work, or students who are trying to study. So generally, they get into the trap of this drug because it targets the central nervous system, and it is even used in narcolepsy, which is a sleep disorder. So it looks like glass fragments, and it is generally smoked, swallowed, or even snorted, and it can also be injected after dissolving the powder in water or alcohol. So an overdose of meth can lead to myocardial infarction, which means a heart attack, and it can also cause stroke. So it also results in the blood pressure shooting up suddenly, and it is very dangerous if there is an overdose. So meth also raises the amount of dopamine in the brain, which means you start feeling good about it. So that's why people get addictive of it. So any overdose can be lethal for you. So that's why it is said that this amphetamine or methamphetamine, they are dangerous for the human body.
So the next topic is oncolytic viruses. So this topic is important for your science and tech section. So recently, a journal named Cancer Cell has suggested that certain viruses called the oncolytic viruses, they uh, increase the immune capacity of the body against cancer, because these viruses recognize and destroy cancer cells. They selectively target and kill cancer cells while sparing the normal cells. So they also enhance the human body's immune system's ability to recognize and terminate these cancer cells. So similarly, a virus named myxoma, which is also an oncolytic virus, has been found to be very effective, because when it affects the T cells, when it infects the T cells, it can lead to a certain type of cancer cell death which has not previously observed. So that's why there is also a good use of virus. Not all viruses are bad, of course. So this is a good use of virus, and probably in the next few years, we'll see that these oncolytic viruses will play a major role in the elimination of cancer in the world. So the next topic is bhang. So this topic is important for your security section. So you know that recently a man was granted bail for possessing 29 kg of bhang and 400 gram of ganja by the Karnataka High Court, because the court observed that bhang is not a prohibited drink or a prohibited drug under the NDPS Act. So the single judge bench relied on the two earlier judgments, Madhukar versus the state of Maharashtra of 2002 and Arjun Singh versus state of Haryana in 2004. And these courts, under these judgments, the courts observed that bhang is not ganja, and that's why it is not covered under the NDPS Act. So then what is bhang? So bhang is an edible preparation. It is made from the leaves of cannabis plant, and generally it is used in the preparation of thandai and lassi. It is being consumed in the Indian subcontinent for centuries, and it is generally consumed during the festivals of Holi and Mahashivratri. So the next topic is Nuakhai Johar. So this topic is important for our art and culture section. So recently, PM Modi has greeted the people on the auspicious occasion of Nuakhai Johar, which is an important social festival of Western Odisha and the adjoining areas of Jharkhand in the Simdega region. So it's an agricultural festival. It is observed to welcome the new rice of the season. Nua means new and Khai means food. So it is generally observed on the 5th day of lunar fortnight of Bhadrapada month. And Nuakhai is understood to have 9 colors. That's why 9 set of rituals are followed. People generally offer their newly harvested crops called Nabanaha to their respective presiding deities, and they relish different types of delicacies after this offering to the deities. Okay, so that's how Nuakhai Johar is observed in Western Odisha and the Jharkhand areas. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.